Hello student, I am Jyoti Jha. Welcome to NCERT The Mind. Today NCERT The Mind present class 6 Social Science, Social and Political Life 1 Chapter 1 Understanding Diversity Question Answers। तो बच्चों आपने अभी तक इसका चैप्टर तो पढ़ लिया है। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, आप इसे लिखिए अपनी कॉपी में। Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? आंसर होगा होली। होली किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन कौन मनाता है, किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो देखिए, होली हिंदूज, सिख्स, जैन। इसके बाद दिवाली, दिवाली हिंदूज, सिख्स, जैन। इसके बाद ईद उल फितर, मुस्लिम्स, क्रिसमस, क्रिश्चियंस। लोहड़ी हिंदूज एंड सिख्स। रक्षाबंधन हिंदूज, सिख्स, जैन। उसके बाद है गुड फ्राइडे, क्रिश्चियंस। Almost all the members of different communities in our neighborhood shared a celebrate these festivals. अब दूसरा क्वेश्चन है, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? आंसर है, the rich heritage of diversity in India adds variety to our life, enriches our lives in many ways. We learn many things from each other and share our experiences. It teaches us to be open-minded and tolerant. We celebrate different festivals together and learn different languages, cultures, etc. It helps us evolve as better human beings because we respect people with different religious beliefs, viewpoints, tastes, customs, and cultures. A sense of friendship and unity develops, which brings harmony and prosperity. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज एन appropriate terms to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the senses quote above from his book The Discovery of India? The answer है, the phrase unity in diversity very well describe India. India is a land of various culture, castes, creed and religion. Still people live in harmony and brotherhood. They celebrate festivals together and share their joys and sorrow together. Differences in terms of cultures, religion, and languages add in enchantment and spice to our life. This diversity helps us live a harmonious life. In fact, unity in diversity is a base for Indian culture's nationalism. Fourth question है, underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh measure which according to you reflects India's essential unity. Answer, the line, the blood of Hindus and Muslims
flow together today, reflects India essential unity. फिफ्थ में है choose another reason in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influences the diversity. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? आंसर है कि लद्दाख के बारे में है। आपने तो लद्दाख के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में दिया हुआ है। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Very little agriculture is possible here. This region does not receive and rain and is covered in snow for a large part of the year. It was considered a good trade route as it had passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. Kerala. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on the side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Christians, Jewish and Arab traders were the first to come here. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. Both religions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर तो हो चुका है। अब है आपका हार्ड वर्ड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर में हार्ड वर्ड्स है, तो इसे आपको सीखना पड़ेगा। आप इसे भी याद कीजिए। देखिए फर्स्ट में क्या है, कम्युनल राइट्स मीन्स सांप्रदायिक दंगे, एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी विविधता का पहलू, इरिवर्सिबल मीन्स अचल, ट्रेड मीन्स व्यापार, फेमाइन्स मीन्स अकाल, ड्राउट मीन्स सूखा, इन्फ्लुएंसेस मीन्स को प्रभावित, सेल्डम मीन्स कभी कभी। उसके बाद है कल्टीवेशन मीन्स खेती, मेजर मैस्कियर मीन्स विरोध, अनआर्म्ड मीन्स निहत्था, वाउंडिंग घायल, ओपन फायर आग लगा दी, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। उसके बाद है रीजनल मीन्स क्षेत्रीय, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, इनरिच समृद्ध, डाइवर्स मीन्स विविध, यूनिटी मीन्स एकता, क्वाइट मीन्स काफ़ी, यूनिक मीन्स अनोखा, डिफर मीन्स अलग, टर्म्स मामले, रिचुअल्स मीन्स रस्म रिवाज, प्रोबेबली मीन्स शायद, चांसेस मीन्स संभावना, इंटरसेक्शन मीन्स चौराहा, रायोट्स मीन्स दंगा। तो चलिए बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स दोनों अब खत्म हो चुके हैं। अब आप इसे बार बार पढ़िए, याद कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।
Take care. Thanks to watch my video.